अब हम उड़ान से 9 मिनट 27 सेकंड की दूरी पर सभी आंकड़ों का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। SS3 prime chain actuation completed. SSLV-D1 का फ्लाइट घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। प्रथम चरण SS1 का प्रज्वलन करीब 117 सेकंड तक चलेगा। इसके पश्चात SS2 का इग्निशन होगा और इस दौरान यान करीब 90 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा। इसके बाद इंटर स्टेज का पृथकीकरण होगा। द्वितीय चरण के दौरान ही यह यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा, जिसमें वह आंतरिक जायरोमीटर तथा एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी स्थिति की जानकारी ले दिशा निर्धारण करेगा। इसके बाद करीब 107 सेकंड पर यान जब 140 किलोमीटर पर होगा, इसमें पेलोड फेयरिंग ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। -8 मिनट्स। क्रमशः SS2 का प्रज्वलन के पश्चात उसे पृथक कर लिया जाएगा तथा SS3 का प्रज्वलन होगा और अंत में VTM की मदद से कक्षीय स्थिति प्राप्त कर उपग्रह EOS-02 तथा आजादी सेट का अंतक्षेपण किया जाएगा। The campaign for SSLV-D1 mission has lasted for a mere 7 days. Countdown has begun this morning at 2 hours 18 minutes and has lasted for 7 hours. During this time, the batteries are charged and the checks related to the health parameters of satellite and launch vehicle are carried out. SSLV-D1 का मिशन दक्षिणी दिशा क्या है, इसलिए यहाँ शार, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर तथा यात्रागा स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से यान को पूर्णतः अपनी दृष्टि पर रखा जाएगा। यान के सभी आंकड़े टेलीमेट्री द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिससे यान की पूरी जानकारी हमें वास्तविक समय में उपलब्ध हो रहती है। We are 3.5 minutes away from the launch. The SSLV is a 3-stage launch vehicle with all solid propulsion stages. The first stage is powered by 87 tons of HTPB-based solid propellant. It happens to be the third largest booster for ISRO after the S-200 powering the mighty GSLV Mark III as twin strap-ons and the S-139 powering the PSLV and GSLV as core booster. It is the 6 minutes. SS1 is a 3-segmented motor having dry joints among the segments. This is a feature to reduce operations time at the launch pad. The second stage is Heritage HPS-3 motor powering the PSLV as third stage with certain adaptations. This is also a solid propellant stage. SS2 has a diameter of 2 meters and length of 3.2 meters. It has 7.7 tons of propellant loading inside a carbon fiber filament wound case. It is capable of generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. The third stage is a newly developed solid motor with 4.5 tons of HTPB based propellant loading capable of developing 160 kilonewtons maximum vacuum thrust. SS3 also is a carbon filament wound case having 1.7 meters diameter and 2.8 meters length. To ensure precise satellite injection into the intended orbit, a liquid bipropellant based velocity trimming module is used. It has monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen as fuel and oxidizer respectively.
The propellant of VTM also aids in the roll control during the SS2 and SS3 flight regime and control of pitch, yaw and roll during the coasting phase. SSLV has an encapsulated assembly comprising of VTM, satellites on a variety of payload adapters ensconced in the heat shield halves. The heat shield is of ogive shape made of composite with co-cured cork thermal protection system. minus 4 Overall, the minutes, SSLV is 34 meters tall, 2 meters in diameter and has a lift-off mass of about 120 tons. अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 42 सेकंड की दूरी पर हैं. Pyro and valve battery on. Onboard computer in flight mode. SSLV का यह प्रथम प्रमोशन मुख्यतः 2 उपग्रहों को अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित करने का है. पहला EOS-02 जो कि 135 kg का माइक्रो सैटेलाइट भूप्रेक्षण उपग्रह है और इसे मध्य रेखा से 356.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा 37.21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतःक्षेपित किया जाएगा. S2 के साथ एक और अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर. The tracking of the launch vehicle during the flight is done minus by 2 the minutes. ISRO telemetry tracking and command network called the ISTRAC. The SSLV-D1 EOS-02 being a southbound mission, 6 tracking stations are participating. They are Shar, Bangalore, Trivandrum, Port Blair, Singapore and Yattaragga. These tracking stations have overlapping visibility to track the flight trajectory and staging events. We are 1 minute 30 seconds from आज का मौसम यहाँ बदली वाला है. यहाँ जो दर्शकगण आए हुए हैं लॉन्च को देखने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है. minus 1 minute, Distract Saab Sam. अब हम 1 minus मिनट 45 की seconds, दूरी पर प्रमोशन से minus 50 seconds, All sequences armed. minus 45 seconds, minus 40 seconds, minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. that was a brilliant Eco-tracking. lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D1 लॉन्च व्हीकल का. SSLV-D1 EOS-02 मिशन अपने गंतव्य की ओर. सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये. प्रथम प्रमोशन SSLV-D1 का. Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction.
First stage performance normal. SHAR1 as in main auto. plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ SHAR2 as in main auto. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. SHAR, Bangalore and Trivandrum It is telemetry to stations TDDT. tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the 17 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the stage separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is Vehicle is in 260 combined kilometers. coasting. 4 hours, 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal.
इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी।